There was a very risky life today for us. This is very risky. They should take some stand on this because our lives are going to be very risky. The fire. What happened? What happened actually? The fire were launched on 3 o'clock. This metro guys did not listen to us. Fully it was fired, and we were into danger today. We just pray to God that everyone is safe today and everyone is in their places right now. So I kindly request the government to take any stand on this because this is very risky for our lives. We have babies with us, we have our mothers, we have our properties and all with us. So please kindly take stand on this. We are not able to take more this understanding with this because this is not able. This kind of incident happened. Yeah, today this incident happened with us. This was first time. Actually, not first time. It's truly happened 2 times here. कभी भी ऐसी लापरवाही करती है ना, कभी भी हमारी बात सुनते नहीं। बच्चे रहते हैं छोटे, बहुत यहाँ तकलीफ दे रही है ना। रातों में सोने दे रही नहीं हम ना, रातों में दिन भर काम कर रही हूँ ना, रात में भी कर रही, दिन में भी कर रही। बच्चे बीमार हैं, हमारी पूरी बिल्डिंग में तबीयत हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, सब है, मगर बहुत तकलीफ दे रही है। क्या डैमेज हुआ? यहाँ पर बहुत चीज़ हो गए, पूरा कपड़े चले गए हमारे, जो था सामने का पूरा जलगा, पूरा यह होगा, टेरिस का भी जलगा, पूरा जितना भी हमारे फर्स्ट फ्लोर है पूरा जलगा। हमें बहुत नुकसान हो गए, मगर इससे पहले उनको लापरवाही बहुत है, जानों का खतरा होना था। हमें अल्लाह के फजल से हमारे बच गए हमें, मगर जो लापरवाही जो करे है ये बहुत ये करे। देखो हमें जो 2 औरतें खड़ के बहुत चीखे, ये आँच लग रही तो कुछ भी नहीं बोले ना, हंसी मजाक कर लेकर थे। हमें बहुत याद करे इन्होंने, बहुत बोलते रहते भी सुने नहीं, पानी डाले भी नहीं, कुछ भी करे नहीं उन्होंने। यहाँ तक कि हमारी पूरी ये फर्स्ट फ्लोर और जो है आगे पीछे का पूरा जल गया हमारा।